Jai Anilo Premadano Karma Kacho Bhaktivedanta Swami Prabhupada Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktivedanta Swami Krishna Goswami Prabhupada Ki Vrindavan Ki Bhaktivedanta Ki Mayapurnavadivadanta Ki Shamanamai Ki Bhaktivedanta Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Devi Ki Samadeva Bhaktivedanta Ki Sankirtan Yagna Ki. All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All praise. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद और सातवां श्लोक. Samdu Anastritya Paranu Chintam Rite Pashun Ashatim Nama Purya
Pasyan Janam Patitam Vaitaranyam Svakaramajan Paritapan Jushanam Kastam Svalladritya Paramanuchintam Krite Pashun Asutim Nama Korya Yanjanam Patitam Vaitaranyam Sakarnachan Sarikapan Chashkushanam Kastam Tvana Ditya Paranuchintam Jite Pashun Ashatim Nama Kurya Yanjanam Patitam Vaitaranyam Sakarnajan Paritaham Shanam Overcome Come That Skin Two But Lacking Anadritya by neglecting Upekshato Parananachintam transcendental thoughts Divya Vichar Rite without Vida Pashun the materialists Bhaktivedanta Asatim in the non-permanence Chanting Nama name Nama Kuriyat will adopt Shikar Karega Pashyan seeing definitely निश्चित रूप से देखते Janam the general mass of people जनता Patitam fallen Patita Vaitaranyam in Vaitarani the river of suffering दुखों की नदी वैतरणी Sakarnachan produced from one's own work अपने कर्मों से फल Paritaham suffering दुखों को Jushanam being overtaken by आत्मिकता Translation and purport by Srila Prabhupada. Who else but the gross materialists will neglect such transcendental thought and take to the non-permanent names only, seeing the mass of people fall in the river of suffering as the consequence of accruing the result of their own work? निपट भौतिकता के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो ये देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फल के कारण कलेशों की नदी में गिरे हुए हैं। Purport by Srila Prabhupada. In the Vedas it is said that persons who are attached to demigods to the exclusion of the spouse, the materialists, like animals, also do not know how they are being misdirected by neglecting the transcendental thought of the Supreme Person. No one can remain vacant of thought. It is said that an idle brain is the devil's workshop, because a person who cannot think in the right way must think of something which may bring about disaster. The materialists are always worshipping some minor demigods, although this is condemned in the Bhagavad Gita 7:20.
As long as a person is illusioned by material gains, he petitions the respected demigods to draw some particular benefit, which is, after all, illusory and non-permanent. The enlightened transcendentalist is not captivated by such illusory things. Therefore, he is always absorbed in the transcendental thought of the Supreme in different stages of realization, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. In the previous verse, it is suggested that one should think of the Supersoul, which is one step higher than the impersonal thought of Brahman, as it was suggested in the case of contemplating the Bharat group with the personality of Godhead. वेद में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो कसाई घर ले जाने वाले व्यक्ति का भी अनुसरण करते रहते हैं या भौतिकतावादी भी पशुओं की तरह या नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा the non-permanent names. अलग-अलग नाम बताया गया है. How different this is than the transcendental names. ये दिव्य नाम कितना महत्व है ये बताया गया है. In this world, the name and the object which is denoted are not the same quality. इस जगत में नाम और जो वस्तु है उसका गुण एक नहीं है. We see, for example, that every language has a different sound for representing a particular thing. जैसे हम देखते हैं अलग-अलग भाषाओं का अलग-अलग स्वर होता है और अलग-अलग वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है. And even sometimes languages change over a period of time, but the thing itself doesn't change. और कभी-कभी समय के अनुसार जो भाषा वो बदल जाता है, जो वस्तु है वो नहीं बदलता. This is the world of relativity and the world of names. ये इस जगत में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सब कुछ बदलते रहता है. Flickering manifestations of the material nature. ये भगवान का शक्ति का प्रभाव है. Our body, subtle bodies, are also of that flickering material manifestation. हमारा सूक्ष्म शरीर भी इसी तरह से फलक हुआ है. Our thoughts also are made of the same flickering substance. हमारा विचार भी इसी तरह से है. But the whole idea of transcendental life is to get into touch with that which is permanent or eternal, which does not change. लेकिन दिव्य जीवन का जो पूर्ण विचार है ऐसे वस्तु के संग हम करें जो बदलता नहीं है. The soul itself is of that eternal nature. आत्मा स्वयं उस स्वभाव का है. Krishna is the source of that eternal nature. कृष्ण स्रोत है इसका. Krishna's Dham is eternal. कृष्ण के नाम सनातन. Krishna's name is eternal. कृष्ण के नाम सनातन है. In fact, everything about the spiritual world, its name, its form, its qualities, and the activities themselves are all of the same eternal nature. भगवान के धाम में नाम गुण स्वरूप सब दिव्य रूप का है. So there is no sense of confusion. That is to say, here we have the spirit soul encased within a material body. It is duality, dichotomy. तो हमें भ्रम में नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा जो आत्मा जो है वो भी कभी-कभी दिव्य रहता है और अदिव्य रहता है. But there is no such duality in spiritual life. ऐसा बदलापन नहीं है दिव्य मार्ग भगवान का. So our process of Bhakti Yoga is to bring about a state of consciousness in which we feel ourselves to be more and more absorbed, free from duality, in touch with that spiritual truth. ये भक्ति मार्ग का जो मार्ग है इसमें हमारे चेतना को उस स्तर पर हम ले जाते हैं कि हम ये रद्द-बदल
के मार्ग से परे हो जाते हैं। It is difficult sometimes to understand how our ordinary activities are done in devotional life are actually spiritualized. कभी-कभी हम ये सोच नहीं सकते कि सामान्य कार्य जो हम करते हैं किस तरह से दिव्य हो जाता है। Our being with our families, if the families are devotees, our doing our work, if we are using the result of our work for Krishna, are not materialistic. जैसे हम परिवार में रहते हैं और परिवार भक्त है तो हम कोई भी काम करते हैं कृष्ण के लिए, ये संसारिक काम नहीं है। The whole point is somehow to connect our lives with Krishna. मुख्य बात है कि किसी तरह से हमें अपना जीवन को कृष्ण के संग में जोड़ना है। Now I am visiting so many homes and I see how each of you has made a nice altar or placed spiritual paintings on the walls. तो मैं अपने ही भक्तों के घर में मैं घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप सबके यहाँ पर पूजा करने के लिए ऑल्टर इत्यादि है और अच्छे तस्वीर इत्यादि लगे हुए हैं। The food which is cooked is being offered to Krishna. जो भोजन आप बना रहे हैं वो आप भगवान को अर्पण करते हैं। All the children in the family and other family members are gradually becoming Krishna conscious. धीरे-धीरे आपका परिवार के सब लोग भक्त बन रहे हैं। So this is transcendental life. This is Krishna consciousness to spiritualize every aspect of our life. Now, gradually, we have to also understand more and more about this spiritual science. हमें और ज़्यादा ये दिव्य ज्ञान और दिव्य सेवा को समझना है। The Srimad Bhagavatam has the narrations of great personalities in history. श्रीमद् भागवतम में महान भक्तों के जीवन के विषय बताया गया है। And we are given the opportunity to associate with these great personalities. और हमें मौका मिलता है कि हम इन महान भक्तों के साथ कर सकें। We are made to feel close to personalities like, for example, Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami, Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज, परीक्षित के और करीब हम चले जाते हैं। All of them are eternal persons. ये सब भगवान के नित्य सेवक हैं। The activities of persons like Parikshit Maharaj or Prahlad Maharaj are very ideal. प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज का जो कार्य है बहुत विचारणीय है और आदर्श है। The Sita and Ram, very ideal, noble characters. सीताराम का भी जो उदाहरण है वो बहुत आदरणीय है। Now, if we absorb ourselves in remembering these persons and their activities, their qualities become our qualities. अगर हम इतने महान भक्तों को भगवान को ध्यान करेंगे तो उनका जो गुण वो हम में आ जाएगा। We are born with so many base qualities. हम जन्म लिए कितने खराब गुण हमारे अंदर हैं। But our initiation into the Krishna Consciousness movement is a new birth by which all of these great persons become our family members. जब कृष्ण भावना में हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है और ये सब नए जो भक्त महान भक्त थे हमारे परिवार हो जाते हैं। There's no need to feel yourself alone or estranged in this world unless you are living in this world. But we also simultaneously live in this spiritual world, the world of the Srimad Bhagavatam, and we don't feel ourselves lonely because we feel associated with all of the persons who are present on the pages of the Bhagavatam. हमें इस जगत में अकेला नहीं समझना चाहिए कि हम अकेला है, क्योंकि हमें भगवत के संग करना और भगवत में इतना महान भक्त लोग हैं तो वो हमारे संग में ही है। Now, it is described that just as there are different levels or hierarchies of, say, in everything there's different hierarchies. In business, there are different stratas of jobs.
In government, there are different positions. Among nations, there are less wealthy, more wealthy. In planets, also, there are different planetary systems, some higher, some lower. जैसे अलग-अलग स्तर होता है, कोई काम करता है, काम पर भी होता है, अलग-अलग देश में भी होता है, और यहाँ तक कि ये जो अलग-अलग लोग हैं, इस पर भी अलग-अलग स्तर का होता है, अलग-अलग लोग. So we are advised that that highest realm of all is the place of Krishna, Krishna Loka. तो सबसे ऊंचा स्तर जो है वो कृष्ण का है और वो कृष्ण लोक है. And the Bhagavatam in the 10th canto gives us detailed information about the inhabitants and their activities of this Krishna Loka. भागवत में 10वें स्कंद में कृष्ण लोक में जो भक्त रहते हैं उनका कार्य क्या है, क्या करते हैं, वो बताया गया है. We are being drawn in by the Bhagavatam to this Krishna Loka place. भागवतम के जरिए हम इस स्थान के और करीब जाते हैं, कृष्ण लोक. And with the idea that Krishna is all attractive, and when we hear about Krishna and his associates, then we will lose our attraction for anything else other than Krishna. ये विचार से कि कृष्ण सबसे आकर्षक वान है और हम कृष्ण से आकर्षित होंगे तो सांसारिक वस्तु से हमारा जो लगाव वो कम हो जाएगा. Normally, our lives are full of so many worries, so many thoughts. How is this person doing? How is that person doing? How am I? How are you? वैसे सामान्य रूप से हमारे जीवन में बहुत अलग-अलग विचार आता है दूसरे व्यक्ति के प्रति, अपने प्रति. But we should become so Krishna conscious that we replace this worldly anxieties with the thoughts about Krishna and his associates. तो हमें इतना कृष्ण भावना हो जाना चाहिए कि जो संसार के जो चिंता इत्यादि है उसके बदले में हमें कृष्ण का चिंतन आ जाना चाहिए हमारे मन में. As Mother Yasoda feels anxiety if something threatens her Krishna, or as the gopis play tricks or games with Krishna, or his friends play with him. So our minds should gradually become so Krishna conscious that we are remembering Krishna Leela. जैसे यशोदा माँ कभी-कभी घबरा जाती है कि गोपी लोग किस तरह से चालाकी करते हैं कृष्ण के प्रति या कुछ असुर लोग आ जाते हैं, तो उस तरह से हमारा भी मन हमेशा कृष्ण के प्रति लगा रहना चाहिए. The chanting of the holy names of the Lord, the Hare Krishna mantra, is our means of approaching into this Krishna Leela. ये महामंत्र जो हम जाप करते हैं इस मार्ग से हम कृष्ण भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं. The acharyas have given us very nice explanations for the meanings of the Mahamantra. आचार्य ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है महामंत्र का. The simple translation, "O Krishna, O Radha, please engage me in your service," is a summary of how to understand the mantra. बड़ा सरल उदाहरण दिया है, कृष्ण हे राधा कृपया करके अपने सेवा में मुझे लगाइए, यही समझने का पूरा मंत्र है. Within the mantra, we will find Krishna himself and his consort Radharani and their entire associates and world. ये महामंत्र में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और उनके जो सेवक लोग हैं और पूरा सारा जगत हम पा सकते हैं. Sri Chaitanya Mahaprabhu demonstrated the highest level of transcendental realization through the chanting of the holy name of the Lord. चैतन्य महाप्रभु ने सबसे उत्तम स्तर का अनुभव किया भगवान के नाम जाप करने में. So we should learn to absorb ourselves in chanting the Hare Krishna mantra. This is the Yuga Dharma. हमको भी उसी तरह से सीखना चाहिए कि किस तरह से हम भी हमारा मन भी लगे और यही युग धर्म है. It does not require that we try to force some meditative process upon the chanting. ये कोई वैसा ध्यान करने का मार्ग नहीं है कि जबरदस्ती हमें करना चाहिए. Rather, we should approach the holy names in a humble mood of service. हमें बड़ा नम्र भाव से
जप करना चाहिए। And repeating very clearly and attentively the sound vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When the holy names are pleased with us, they will reveal to us all of their transcendental qualities and opulences. तो हमें बड़ा साफ से अच्छी तरह से ये पूरा मंत्र बोलना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा, और जब ये महामंत्र हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो सब अच्छे अच्छे गुण खुद आ जाएंगे। In other words, the holy name is not different than Krishna. ये जो महामंत्र है कृष्ण से अलग नहीं है। And as Krishna promises, as he says that when you worship me, I will reciprocate accordingly. So Krishna, in the form of his names, will reveal himself fully to the sincere devotee. तो कृष्ण कहते हैं कि आप जितने मेरे करीब में आओगे, मैं उतने आपके करीब में आऊंगा। तो कृष्ण नाम के रूप में अगर हम कृष्ण के करीब जाएंगे, तो भी हमारे करीब आएंगे। And we should understand that our devotional service, whatever it may be, is also part of serving the holy name, of serving Nam. और कोई भी कार्य हम भक्ति मार्ग में करते हैं, वो सेवा है, और वो भी नाम के संग ही जाता है। There is a connection between the chanting of the holy names of the Lord and all of the service we do throughout the day. जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के लिए और नाम जप करते हैं, इसका संबंध है। The service that we do is another way of being connected with Krishna. जो कार्य हम करते हैं, ये भी हमको कृष्ण के संबंध में लाता है। We should gradually come to the point that throughout the day, in any one of our activities, we feel equally connected with Krishna, even as we do in the midst of a big roaring kirtan. कोई भी कार्य हम करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण के संबंध में करते हैं, यहाँ तक कि जो हम कीर्तन भी करते हैं। Srila Prabhupada demonstrated a wonderful example for us to see of how Krishna consciousness looks under all different circumstances. प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि कृष्ण भाव में अलग-अलग कौन से अगर हम देखें तो कैसे दिखता है। Whether it happened to be flying on an airplane, taking a walk, meeting some people, playing with a child, taking prasad, whatever the activities of Prabhupada was, he performed them in a wonderful state of consciousness. प्रभुपाद ने दिखा कि चाहे हम चले, चाहे विमान उड़ाए, कुछ भी कार्य करें, तो प्रभुपाद ने दिखा दिया कि सब कार्य बड़ा अच्छी तरह से कृष्ण भाव में हो सकता है। So that consciousness, that level of Krishna consciousness is possible if we follow Prabhupada's example. ये चेतना कृष्ण भावना का ये हो सकता है जब प्रभुपाद का उदाहरण हम लेकर चलेंगे। It is not very difficult, as Srila Prabhupada says. प्रभुपाद कहते हैं बहुत कठिन नहीं है। You just have to do as I do, Prabhupada said. आपको वैसे करना है जैसे मैंने किया। And Prabhupada made very clear his example. He lived in an open way with his disciples so that they could observe very carefully in what he was doing from day to day. तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे उदाहरण से खुले हुए उदाहरण से उन्होंने दिखला दिया और कैसे कि दिन प्रतिदिन का कार्य उनके जो शिष्यगण थे वे देख सकते थे कि वे क्या करते थे। We are getting many nice opportunities to see our fellow devotees of ISKCON leaving their bodies in Vrindavan and Mayapur. हमारा बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे कई भक्त वृंदावन में मायापुर में अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया। And it is very remarkable to see how well they do. और कितने अच्छे तरह से उन्होंने किया। Peacefully, they leave their bodies. बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। Mother Rasaka was telling me that her husband, he left his body recently in Vrindavan, so she took him to Vrindavan in the last part of his life. तो माता जी यहाँ पर है, वो गुरुदेव के बतला रहे थे कि उनके पति ने अपना शरीर वृंदावन में छोड़ा और उन्होंने उनको आखिरी समय में वृंदावन ले गई। Very nice disciple of Prabhupada, Lautoka, who used to perform many dramas.
Prabhupada's pleasure. प्रभुपाद के बहुत अच्छे शिष्य थे और बहुत ही नाटक प्रभुपाद के लिए उन्होंने किया भगवान देने के लिए. And so, in the last 10 days or so, he came back to Vrindavan. He was in New York, and he was teaching dramas to the guests on Sundays and the young people who were performing dramas. And then he got notice that now your time is finished. So he went to Vrindavan. She took him there. तो न्यूयॉर्क में नाटक इत्यादि सिखला रहे थे भक्तों को और जब उनको महसूस हुआ कि मेरा जाने का समय आ गया तो माता जी ने उनको वृंदावन लेकर आए. And so he was at the Krishna Balaram temple, and in the last few minutes they were talking, and she reminded him, now you have to chant Hare Krishna. तो कृष्ण बलराम मंदिर पर बैठे और आपकी समय पर माता जी ने उच्चारण कराया कि अब आपको महामंत्र जप करना है. And he was trying to chant. और जप करने की कोशिश कर रहा था. Then it was difficult for him to chant in the last few minutes, but she was chanting, and then very peacefully he gave up his body. तो वो नहीं जप कर पाए. माता जी जप कर रही थी और बस साधारण शांत स्वभाव से शांत रूप से उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया. So here is a life led in Krishna consciousness, and then, as Prabhupada says, you'll be able to go back to God very easily. तो ये A little advancement, Krishna says, on this path is detected in the most difficult time, which is the moment of death. तो ये जीवन आप देख सकते हैं कृष्ण भावना में किस तरह से व्यतीत हुआ और प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान का धाम आपको ले जा सकता है. थोड़ा सा ही कृष्ण भावना में कार्य करेंगे तो आपको प्रवृत्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा. Passed away in the holy Dham, hearing the holy name. भगवान के धाम में शरीर छोड़ना, भगवान के धाम में उसका नाम लेना. Led his life in service to Krishna. कृष्ण की सेवा में बिताना. But we have to do like that. ये सब हमें करना है. We do as far as we can, as much service as we can. जितना ज्यादा मात्रा में हम कर सके हमें करना है सर. And then when we get notice that our time is over, as Prabhupada got notice, he wanted to go one more time around the world, but then he could see it's not possible. Then he told me, bring me back to Vrindavan. तो जब हम जान सके कि हमारा समय पूरा हो गया, जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद एक बार और पृथ्वी के चक्कर लगाना चाहते थे, इसीलिए गुरुदेव ने वृंदावन ले गए. And then he left, surrounded by the devotees chanting the holy names, and he left his body. तो भक्त के मध्य में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद ने अपना शरीर को छोड़ दिया. We didn't finish the purport. Intelligent persons who can see properly may look into the general conditions of the living entities who are wandering in the cycle of 8,400,000 species of life, as well as different classes of human beings. It is said that there is an everlasting belt of water called the river Bhaktivedanta at the entrance of the plutonic planet of Yamaraj, who punishes sinners in different manners. After being subjected to such sufferings, the sinner is awarded a particular species of life according to his deeds in the past. Such living beings are punished by Yamaraj, as seen in different varieties of conditioned life. Some of them are in heaven, some of them are in hell. Some of them are Brahmins, some of them are misers. But no one is happy in this material world, and all of them are either class A, B, or C, prisoners suffering from because of their own deeds. The Lord is impartial. ऐसी जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं. इनसे कुछ स्वर्ग में आते हैं तो कुछ नरक में आते हैं. इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस. किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता. वे सभी प्रथम, दूसरा या तीसरा श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं. भगवान जीवों को कष्ट की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसा जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं. So, today we will conclude early.
our godbrother, the Treasure Pandit, will be going to the airport, so I want to go to the airport to see him off. And I invite any others who have the time and are free that they may also like to do that. He has given us so much pleasure with his kirtans. गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा गुरु भाई और कृष्ण प्रभु आज जा रहे हैं वापस. Now we have a better and the chapter. This is a good arrangement. I get two donations. Maybe I should do this more. So I think the other daughters maybe will give them the peaceful names of Padma and Shankar. Is your second daughter's eye okay? Yes, sir. No problem. Somebody's great. Some insect repellent in her eyelid. She was crying. Okay, so we should have darshan now, and I will go quickly because he's leaving at 7:30, so I will see the deity and then offer flowers to Prabhupada, and I will go because I want to see more. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, or Bhaktivedanta Swami Prabhupada, or